Assalamu alaikum students. This is Monday, April 5, 2021. I am Asim bin Salim and I am teaching you the subject of physics in continuation to our previous work. Hope you all are doing fine at home. I welcome you all in today's class of physics. So in continuation to our previous work, we have already covered 3 chapters of the physics. The first chapter, physical quantities and measurements. In the second chapter, kinematics. And the third chapter was dynamics. We have already covered these chapters. And now in continuation to these, we are starting our chapter 4 from today. And the chapter number 4 is turning effect of forces. So as we already discussed about what is force, how it is produced, and what are the causes and effects of the force, and we have also studied the properties related to that, including the laws of motion. So today we will discuss the turning effect of a force, that how a force causes any body to turn, where it acts, and what kind of rotation it produces. So turning effect means to rotate a body by the application of a force. So in this chapter we will learn about uh, like and unlike parallel forces, so which causes a body to rotate. Then we will discuss about vector addition, like because force is a vector quantity, so we have to add them. So how they add up to provide an added effect to an object. Then with the rule, head to tail rule is used for vector addition of forces. So after that we will discuss about torque and the principle of moments. Later on, the couple force, the force that causes the steering of the wheel to rotate. The force that acts is known as couple force. Then at last we will discuss about equilibrium and its types, and what are the conditions necessary for a body to be in equilibrium. So moving on to our first topic of chapter number 4, that is 4.1, that is like and unlike parallel forces. So as we already studied that what is force? Force is a push or a pull on an object. So like and unlike parallel forces क्या होती हैं? So uh, first, before going to like and unlike parallel forces, first of all we compare that what are parallel forces. Parallel forces कौन सी होती हैं? We have almost studied two kind of orientations, as you have studied in theorems and geometry, that one direction is known as uh, perpendicular and the other is parallel. So perpendicular means just like the floor in the wall. Okay? So angle between them is 90 degree. This means they are perpendicular to each other. So what can we define in our daily life example as parallel? So parallel means two things that are going side by side but not joining each other. For example, we draw two lines that are going side by side but they are not joining at any point, just like you can see in this figure 4.4b, where F1 is a force and F2 is a force. These two forces are acting on an object, and we can say them that they are parallel because if we extend F1 it will go out of this page, and similarly we will, if we extend F2 it will also go downward and will leave the page, but they will never meet at any point. So these kind of lines are known as parallel lines. So therefore the forces that are making an angle of 0 degree or an angle of 180 degree with each other are known as
parallel forces. So there are two types of parallel forces, that are like parallel forces and unlike parallel forces. So by like parallel forces we means there are two forces that are in parallel to each other, but they are in the same direction. Just like you can see that in figure 4.3, that there are like parallel forces, means there is a bag containing apples. So every apple has a weight force, as we studied in chapter number 3, the force due to gravity, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से जो भी कोई बॉडी मैस कंटेन करती है और वो अगर अर्थ की ग्रेविटी में लाई करती है तो उसका एक वेट होता है. सो वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, बिकॉज कि जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. So therefore every object has a weight force, every apple in the bag has a weight force that is directed towards down towards earth. So therefore they have the same weight force, but you can see that they have direction, their direction is same, they are parallel to each other, they are not joining each other, they are parallel to each other. And how they are like? Because they all are directed towards the earth. So this is the example of like parallel forces. As we define like parallel forces, as like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. तो ऐसी forces जो एक दूसरे के साथ parallel हों, और दूसरी कंडीशन क्या है, दे हैव द सेम डायरेक्शन, पैरेलल भी हूँ बट दे शुड हैव द सेम डायरेक्शन. सो मूविंग ऑन टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. तो अगर हम आप इस फिगर 4.4 के अंदर ए और बी दोनों को देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ए को अगर आप देखें, एप्पल की फोर्स है, एप्पल को आपने हैंग किया हुआ है एक स्टैंड के ऊपर, और वो स्टैंड फिक्स्ड है, उसका वन एंड फिक्स्ड है, ठीक. तो ये जो रोप या जिस रस्सी की मदद से इस एप्पल को हैंग किया गया है, ये स्ट्रिंग जो है, इसके ऊपर एक टेंशन है, यानी स्ट्रेचनेस की फोर्स एक्ट हो रही है. टेंशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर. सो क्या है, इस ऑब्जेक्ट की यानी इस एप्पल की एक वेट फोर्स है जो हमने ऊपर देखी, जो बैग के अंदर थी वहाँ पे भी वेट फोर्स लग रही थी, वो वेट फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक. जबकि यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लग रही है जो कि इस स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है, जो कि कौन सी फोर्स होती है, टेंशन की फोर्स, जिसकी वजह से ये एप्पल स्टैटिक है और हंग हुआ है, यानी इसके साथ लटका हुआ है इस स्टैंड के ऊपर. और दूसरी एग्जांपल क्या है कि जैसे आपके पास ये कोई एक रॉड है और उसके दो एंगल के ऊपर, दो पोजीशंस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक तरफ फोर्स अपवर्ड जा रही है और दूसरी तरफ डाउनवर्ड जा रही है. दे बोथ आर पैरेलल एज आई डिफाइंड अर्लियर, but they have opposite directions, therefore we call them as unlike parallel forces. So unlike parallel forces are the forces, ये definition देखें highlighted, unlike parallel forces are the forces that are parallel but have directions opposite to each other. So that's it from topic 4.1. moving on to topic 4.2, that is addition of forces. So here you have seen that in figure 4.4, F1 is a force, F2 is a force, weight is a force, tension is a force. Here all above in 4.3 they all are forces. If we want to add them together, अगर हम forces को आपस में add करना चाहें, तो यूजुअली हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि अगर हम क्वांटिटीज़ को ऐड करना चाहें वेक्टर्स को, तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं. तो वेक्टर्स आर नॉट एडेड एल्जेब्रिकली, यानी मैथमेटिकली आप किसी लीनियर एल्जेब्रा से उनको ऐड नहीं कर सकते. दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रा जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एल्जेब्रा. सो वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो एक कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है, एक रेडी को पुल कर रहा है, और एक और स्टूडेंट है वो भी उसके साथ जाके उसकी हेल्प आउट कर रहा है. दे आर बोथ फोर्सेस, दे आर इक्वली. काज क्या कर रही हैं, उस कार्ड को उन्हें मूव कराना है. तो अगर हम कलेक्टिव सम देखना चाहें दोनों फोर्सेस का, तो हमने दोनों फोर्सेस को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक. सो इसलिए हमें उनकी वेक्टर फॉर्म में, एक तो मैग्नीट्यूड कि किस अमाउंट के साथ कौन सा स्टूडेंट कितनी पावर लगा रहा है, कितना मैग्नीट्यूड दे रहा है फोर्स का, और कौन सा कम दे रहा है, कौन सा ज़्यादा दे रहा है. सो उसके मैग्नीट्यूड की बेस पे हम उनको क्या करेंगे, और साथ ही डायरेक्शन देखते हुए हम उनको ऐड करेंगे. सो एडिशन ऑफ फोर्सेस.
सो टॉपिक कहता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, therefore forces are not added by ordinary mathematical algebra. When forces are added we get a resultant force. So कहता है कि जब हम बहुत सी फोर्सेस को आपस में ऐड करें तो उनका एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है. सो उसकी डेफिनेशन क्या है कि a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. तो जैसे मैंने कहा कि उस कार्ड के ऊपर अगर 2 स्टूडेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या 3 अप्लाई कर रहे हैं तो उनका कलेक्टिव कार्ड के ऊपर जो कलेक्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. सो अब हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं. सो देयर इज अ रूल दैट इज नोन एज हेड टू टेल रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. यानी अगर हमने फोर्सेस को ऐड करना है या वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम उन्हें बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं. और हेड टू टेल रूल क्या कहता है. Before going into the definition of head to tail rule, let's discuss these vectors drawn here. So here is the vector A. Vector A is directed towards east. अगर आप यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना है आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके हिसाब से देखें तो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट. वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. Okay, so they have different direction but they have somehow some kind of similar magnitude. Are they similar? No, the vector A has greater length but vector B has the smaller length. So length represents the magnitude, length of the line represents the magnitude of the vector, and its direction, its arrowhead pointing the direction of the vector. सो लेट्स कंसिडर कि ए इज़ एक फोर्स है, बी भी एक फोर्स है. ए जो है वो ईस्ट की तरफ है और बी जो है वो बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट है. और अगर हमने इन दोनों फोर्सेस को लेट्स से कि ये कार्ड के ऊपर अप्लाई हो रही हैं तो इनको हमने ऐड करना हो और ऐड करके मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखनी है. तो उसके लिए क्या रूल है, हेड टू टेल रूल ये कहता है कि द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी ए का हेड शुड जॉइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर यानी बी की टेल के साथ. तो अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो वेक्टर ए का जो हेड है वो कनेक्टेड है वेक्टर बी की टेल के साथ. तो अगर हम इन दोनों को इस तरह ज्वाइन करें, आपने इनकी हम ओरिएंटेशन यानी इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. एज इट इज़ जो इनकी लेंथ है एज इट इज़ हमने उनको यूज़ करना है. जस्ट हमने उनको प्लेस कर देना है, एक दूसरे के साथ मिला देना है सच दैट कि पहले का जो हेड है वो दूसरे की टेल के साथ हो. फिर इसी तरह अगर यहाँ तो सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स होते तो हम उनको भी इसी मेथड से ऐड करते कि पहले की हेड दूसरे की टेल के साथ, फिर दूसरे की हेड तीसरे की टेल के साथ, तीसरे की हेड चौथे की टेल के साथ, अप टू सो ऑन. जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे हम उनको इसी तरह एक दूसरे के साथ कनकैटिनेट करते जाएंगे. और एट द एंड अगर हमने उनका रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना हो तो वो कैसे ड्रा करते हैं कि हमेशा जो फर्स्ट वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, रिजल्टेंट वेक्टर इनमें से नहीं होता, वो इनका जो सम बनता है दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर. तो उसका भी कोई मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है. तो मैग्नीट्यूड को हम लेंथ ऑफ द लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन को एरो से. तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है कि वो एक वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी टेल हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट होती है और उसका हेड लास्ट वेक्टर जो आपका आखिरी वेक्टर, यहाँ तो 2 वेक्टर थे ना, तो दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट है. तो लास्ट वेक्टर अगर आप 10 वेक्टर्स हैं आपके पास तो 10th वेक्टर के जो हेड होगा उसके साथ उसका हेड कनेक्टेड होगा. सो अगर हम यहाँ पे इस केस को देखें तो 2 वेक्टर्स हैं ए और बी. सो ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्ट है और बी का हेड रिजल्टेंट के हेड के साथ, ए का यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल रिजल्टेंट के टेल के साथ. तो ये जो आर वेक्टर हमारे पास बन रहा है दैट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों का सम है ए और बी का, और इसकी जो आपके पास डायरेक्शन है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन है, ना कि वो ए की है ना वो बी की है, इन दोनों से डिफरेंट है. बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे ए और बी के अंदर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सी फोर्स है, ए. इसलिए आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ज़्यादा ए की तरफ टिल्टेड है.
जबकि बी तो अपोजिट डायरेक्शन में टोटली पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट बना है वो तो समहाउ सिमिलर टू ए आपके पॉइंट कर रहा है। सो इस वजह से ए, क्योंकि ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट ए का है, लेंथ भी उसकी ज़्यादा है, देयरफॉर कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इज समहाउ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, और अगर हम इसको प्लेन से रिप्रेजेंट करें तो क्या डायरेक्शन बनती है इसकी, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। So here it is. It should be noted that head to tail rule can be used to add any number of forces. The vector representing resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force. तो वो जो फाइनल वेक्टर हमारे पास बनता है वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका क्या देता है हमें, डायरेक्शन। ओके, सो दैट वाज हेड टू टेल रूल। Here is the example 4.1. You can read this, go through, the solution is available. If you do not understand, just highlight it. We will discuss it during the class to have better understanding of it. So your homework will be added on the portal. There will be some short questions that are being deduced out of this topic. That are, the first question is what are like parallel forces and unlike parallel forces, and then we have how we add forces. Okay, so that's all from today. We will discuss next topic in our next class. So your homework will be added on the portal. Just follow that and do it neatly on your registers that you were previously using in the pre-ninth. And sorry, I forgot. I congratulate all the students who succeeded and are successfully promoted to the ninth class. Keep working hard and pay attention to your studies. Inshallah, we will meet when schools are being reopened and we are available for the in-campus classes. That's all from today. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.